afternoon, everyone. Welcome to deAsra's social channel program. हम यहाँ पे आज सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से चैनल से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, हर एक चैनल की क्या खूबी है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सब जानने के लिए आए हैं। थोड़ा deAsra की इंफॉर्मेशन से शुरुआत करना चाहूंगी। deAsra एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करता है। बेसिकली कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग है या अलग अलग रजिस्ट्रेशंस होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, वो करवाना, बिजनेस का फॉर्मलाइजेशन करवाना, बिजनेस का मार्केटिंग करना, उसके सेल्स पे ध्यान देके बिजनेस की ग्रोथ करना। तो ये सब चीजें जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेसेस को, माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस को deAsra हैंड होल्ड करता है, सपोर्ट करता है इन सब फील्ड्स में। तो ये deAsra का काम है। और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट्स है वो अपग्रोथ से है। अपग्रोथ एक मार्केटिंग कंपनी है, उसके को फाउंडर मिस्टर भास्कर ठाकुर हमारे साथ यहाँ पे है, और सोमी खेमानी और साहिल खरे भी अपग्रोथ की टीम से हैं। तो अपग्रोथ और deAsra का एक बहुत आई वुड से पुराना रिश्ता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब से deAsra का जो मार्केटिंग था, तब से अपग्रोथ के साथ deAsra, मतलब deAsra का जो मार्केटिंग है और deAsra की जो मार्केटिंग सर्विसेज है वो भी अपग्रोथ ही डिलीवर करते हैं। To introduce Bhaskar Thakur, who is the co-founder of Upgrowth, Bhaskar has had 5 years of experience in marketing as a whole, ऑफलाइन मार्केटिंग हो या सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग हो। भास्कर जी का एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत से स्मॉल बिजनेसेस के साथ साथ बड़े बिजनेसेस के लिए भी मार्केटिंग किया है, उनकी स्ट्रेटेजी प्लान करना, उनका मार्केटिंग करना, तो ये इन्होंने किया है। भास्कर, मुझे आपको एक सवाल करना था, जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी। आपने जब मार्केटिंग, आपका करियर मार्केटिंग में शुरू किया, तब मार्केटिंग ऑफलाइन था, मतलब उस वक्त ब्रोशर्स बंटते थे, पैम्पलेट्स पोस्ट होते थे, फ्लायर्स यूज करते थे लोग। तो उस वक्त का मार्केटिंग और अभी जो सोशल मीडिया का यूज करके जो मार्केटिंग होता है, उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती है? डिफरेंस तो बहुत है, हमें पता है, पर सिमिलैरिटी क्या है उस थॉट में या उस टाइप में? Thank you. So the similarity would be there is customer at the other end. एक तरफ customer होता है और उसको आप reach करना चाहते हैं। Right. और पहले क्या था कि सिमिलैरिटी की तरह से अगर आप देखिएगा कि वो कॉन्सेप्ट सेम है। The purpose of marketing is to reach out to your target audience and put your product in front of them, product, service, and everything in front of them. So that is what the purpose of marketing is. So that is same. उसके अलावा तो बाकी सब कुछ ही बहुत different है। राइट। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते वक्त बहुत सी चीजें अलग से सोचनी पड़ती है मार्केटिंग के तौर पे। प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, क्या कंटेंट लिखा जाए, ये सब चीजें। तो मेरे ख्याल से मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगी ये सेशन जो है। आप शुरू कर सकते हैं आपकी एक्सपर्टीज। थैंक यू। So let's just I hope everyone is comfortable using Zoom and basically chatting on Zoom and asking questions, etc. So one question is, we can deliver this session in Hindi and English. So what is everyone comfortable with? क्या कौन से लैंग्वेज में सब लोग कंफर्टेबल हैं? हिंदी और इंग्लिश? बता सकती है आपकी जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है। Okay, Vishali says either and Shailaja says English. Okay. Hindi or English. Okay. Okay, so I think the response that we are getting is that people are comfortable with both, and some people are saying they're comfortable with English. So we'll continue with English. However, if you have any questions, if you need any clarifications at any point in time, please feel free to
type in and we will try to answer. So yeah, now that we are done with the basic hygiene check and everything, so let's start with the session. And yeah, so I would say today, if we look at the world today and say compare it to something which was 20 years earlier, it's very different. In the sense, and I'm just talking about marketing. Otherwise, there are so many differences that we don't need to get into at this stage, especially in this session. And how is it different? Number one, because phones are in our lives. Now, if you look at phone and history of devices, before phones, there were telephones like the landlines, there was a laptop, there is a desktop, there has been radio, TV, print, and so on and so forth. All these are mediums of reaching out to your customers. Now, phone is very unique because it's a one-to-one mapping of the device and the person using the device. Till now, in our history, in the last 100 years, if you think of modern day history or last 200 years, there has been no device which has a one-to-one mapping to the user. If you think of newspaper, a newspaper is read by at least 5 people in a home. If you look at television, television is viewed by so many people at home. If you look at desktop, everyone at home uses the desktop. Laptop also you share with your family and children and so on and so forth. So it's all, the person may change on the other side of that device or medium. By device, what I mean is phone, laptop, etc. Medium is a newspaper, television, blah, blah, blah. So that is the big shift in terms of availability. So when you were talking about a phone, you're talking about a person. That it has never been the case with any other devices. So that is the fundamental shift in marketing. And I'm sure and no one wants to share their phone even with their spouse. So leave aside sharing it with someone else. So that's how people are. That is one. The second change has been, humans were always social. We met in person to celebrate certain things, to discuss certain things, to go out, to hang out, and so on and so forth. But over the last few years, what happened was communities started to people started to move out of communities. Earlier, people used to live in a village, and mostly people stayed over there. So you knew everyone around you, and everyone you knew was around you. So these were both the scenarios. Today, it is not the case. To people maybe anywhere in the world, and you want to interact with anyone in this world. So that is the other fundamental shift. So in this session, we'll just work with these two scenarios and how, as a marketer, we can leverage that. Right. So the first thing is a mobile phone. Now, all of us are consuming content on mobile, and I mean, I will be happy to I'll be know if there is anyone in this session who spends less than 30 minutes on phone every day. Is there anyone? Please say yes, I spend less than 30 minutes, or just say yes. Anyone who spends less than 30 minutes on phone? Less than 1 hour? Yeah, I guess with the pandemic scenario, everyone is so used to having phone in hand for the whole day, yes. Maybe for work or otherwise. But yeah. Oh, Shailaja is... Shailaja, you spend less than 30 minutes on phone? No, sir, it's 1 hour. 1 hour, okay. So the minimum time spent is at 1 hour on phone, yeah. And you are consuming content of various kinds. You could be WhatsApping, you could be looking at some social channel, you could be watching video, and so on and so forth.
So on an average, people spend about 1.5 to 2 hours on their phones on a daily basis. Now, this means as a marketer or a small business owner, you have access to your customers at least 2 hours a day. Tell me one platform that has that. Newspaper has a shelf life of 45 minutes or maximum, that also in the morning. Television, again, 30 or half an hour or 1 hour or 2 hours, depending on who you are. Like, some people watch more, and again, the usage is at a certain point of time in day. Newspapers is usually read in the morning, television in the evening, or news in the morning and evening, and so on and so forth. But phone is with your customers 24 hours a day. Even when people are sleeping, phone is next to them. And most of the times people wake up from to an alarm from the phone or something like that. So phone is the most connected device to your customers. So now, if we look at these two scenarios, then how do people use phone to discover content? Let's look at the other side. The fact is that your customers have phones. Your customers are available on phone 24 hours a day. Maybe, I mean, when I'm saying 24 hours a day, they are not glued to the screen, but the phone is with them, on them, however you want to call it. So now let us look at how do customers use phone to discover anything new. Now, and we'll start with your own example. Say, for example, you want to find something around you. What will you do? If you want to find something to eat, say you are new to a place and you want to find pizza, so you will Google. Okay, someone says you will Google. So anyone else, how will you try to find, like, say you have a phone, you don't know anyone, or even if you know, that's also fine. What will you do? You will probably Google, you will WhatsApp your friends and find, and so on and so forth. So the research shows that more than 70% of searches, when I say searches, it means search with a e-commerce or commerce intent, is about product or service around you, which means you want to find a pizza place around you. You want to find an electrician who is near you. You want to find a salon near you. No one is interested in finding a salon 15 kilometers away, which is open. Correct. You want to, if you are looking for a medical store or a chemist, as it's called, you want something in 1 kilometer radius. So around me. Would you agree with that? Is that also your own behavior? If you want to find something, just think about it. Like, how many times you are trying to find something new and it is around you, and how many times you're trying to find something which is far away. Like, there are certain categories like travel. You want to go to places that are far off. Correct. But that happens once or twice a year, maybe 3 times a year for some people. But that is not everyday usage. Every day you need things which are around you. Would you guys agree with that your usage pattern is also something similar? If you want, you can type, or you may want to unmute yourself and share your experience. Great. So now this is the consumer behavior. So now let's think of it. How do we use this as marketers? How do we use this consumer behavior to market our products or services? So as someone rightly pointed out, that everything starts with Google. And when you Google, say, electrician around me, or a dentist around me, or whatever, a pizza place around me, what Google does, you may be using Google or you may be using Google Maps. What Google does, it goes to Google Maps and fetches the result around you if you are on your phone. Correct. And this is, and the way, and how to get into these listings, into this result. Now think of your business. How do
how does your business start showing up to your customers? What do you have to do? So what you have to do is create your Google My Business page, which in turn puts your business on Google Maps. And when people search in your vicinity for a product or service that you offer, Google shows them your business listing. So one of the things that we will be doing in this session is understanding in detail what is Google My Business listing and how can small businesses create their Google My Business listing, and what are the advantages. The biggest advantage is discovery, that you get customers around you who are looking for businesses like you. If you bake cakes, you're not going to sell your cake to someone who lives 20 kilometers away. Most of the time, if you are baking from home, you would want to do it in a 1 kilometer radius. Yeah, if you want to send your child for a tuition, you would not send your child to child 15 kilometers away. It will be 1.5, 2 kilometers. So similarly, if you are a tutor, most of the times students will not come to you from 15 kilometers. They will be in the 1 to 2 kilometer. So that is the power of Google My Business and how small businesses can use. So first part of this session would be about Google My Business. And let me ask another question. Like say if you were not to Google, what will you do? What is the next behavior? If say you don't want to Google, or you Google and you don't find the result, then what do you do? What will you do to figure out businesses near you? Say a dentist near you or a salon near you. Yeah, ask your immediate neighbor. Okay, what else? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं. हमने सबसे पूछा था हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो लोगों ने इंग्लिश बोला, पर हम अब हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं. प्लीज बताइए. जी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन. चेक सोशल मीडिया, आस्क इन व्हाट्सएप. बिल्कुल सही. तो आप so we will keep switching between Hindi and English so that it is comfortable for everyone. So if you are not Googling, then you want to ask someone. And most of the time, what happens is you ask your friend, or you go and search on social media, because social media is the other place. Now, social media means, say, your Facebook, your Instagram, and so on and so forth. Because on social media, people are talking about nearby stuff. Hey, I found this. मुझे ये मिला. आप कहीं जाते हो तो आप फोटो डालते हो कि I was at this restaurant और यहाँ का ये मेन्यू अच्छा है, और या जो भी है. तो इससे आपको डिस्कवरी होती है. So second part of the session today will be about how you can use social media for your business. As a consumer, we go and ask our friends. As a consumer, हम जाते हैं अपने नेबर से पूछते हैं, और most of the time हम नेबर से भी सोशल मीडिया पे ही पूछेंगे. नेबर को भी हम इन पर्सन जाके नहीं मिलेंगे कि बोलेंगे भाई बताओ कि कहाँ जाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे कि हाँ उसको डीएम करेंगे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कि भाई बताओ कैसे क्या करना. Correct me if I am wrong. Like that is what I have seen people, and including myself, that is what we have been doing. So आप भी ऐसा ही करते हो कि अगर फ्रेंड से भी कुछ पूछना हो तो सोशल मीडिया पे ही पूछोगे कि आप इन पर्सन करते हैं? I agree, I guess, Bhaskar. Just yesterday's thing, I have one of my friends staying with me as a paying guest in my house, and I wanted to ask her something. She was just upstairs, and I wasn't downstairs, but I still texted her on WhatsApp asking for that thing. So I guess, as you said, it is very much a personal device. Or इतने छोटे distance के लिए भी हम WhatsApp prefer करते rather than actually climbing up the stairs and going and asking it. So I agree. Exactly. So that is how it works. So now we will understand how we can use this consumer behavior to market our business. So that will be the next part of this session.
So it's a 1.5 hour session. We are already 20 minutes into it. I will, now that we have the context, what we can do is we can take any questions. आप लोगों को कुछ ऐसा है कि हम वो cover करें आज के session में? Do you want us to cover something specific in this session? Otherwise, what we will do, the way we have structured is that next 30 minutes will be for Google My Business, and the 30 minutes after that for social media. WhatsApp marketing. Yes. So, social media marketing, yes. WhatsApp marketing is a separate session that happens, but we'll try to touch upon that as we go along today. Can GMB help me in near me searches when I deliver across? Yes, it can. Depending, there are certain constraints to that, but we'll see. But we'll address this question. If you want to address this entire city, then how you can do it. This is both for product and services. Yeah, FB selling. Which marketing format suits well to consultancy? Okay, sure. So I would say now, when you're talking about consultancy, there are two parts to it. First is like lead generation, and then would be branding. You want to be seen as a consultant. So most of the times what we have seen, and we can, and I'm not talking without knowing the details of what kind of consulting you provide, but branding is better on social networks, and lead generation could be better on Google network. When we have a network, it is known to us, but how do we capture new network? Exactly. So that's social media. Now, the beauty of social media is that your network helps you grow your network, because some people in your network will be in so many other networks. So what you have to do is to find people who are passionate, who like your product, who are passionate about your product or service. When I say product, it means both product and service, and so forth. How to measure the effectiveness of social media marketing? So, okay, effectiveness could be defined in multiple ways. Again, it could be, hey, how many people saw my post? So say, and for every channel it is different, and we will cover that as we go along in the session. But I'll briefly touch upon that. On Google My Business, what do you look at? Say, how many people saw your listing? How many people contacted you after looking at it? They may be calling you. How many people posted a comment, or how many people asked a question? So there are multiple ways to measure the effectiveness, and it would depend on what your particular business is. What marketing format suits marketplace branding? We have our own marketplace for multiple sellers, neom.com. So now essentially, see, marketplace has two sides, buyer and seller. Correct. So what your objective should be to reach a stage where buyers find what they are looking for, and sellers have enough number of buyers. So the best format for that would be through social networks, because social networks, on social networks, you can get influencers on both sides. Great. So at this stage, what I will do is, since we are running short of time, I will call my colleague Sahil. Sahil is an expert in social media, and he's helped, I think, hundreds of businesses with Google My Business listing. So over to you, Sahil. Hey, thanks, Bhaskar. I'll quickly present my screen, and then we can go ahead. Okay, is it visible? Is my screen visible? Yes, we can see your screen. All right, great.
So, as Bhaskar said, we are going to talk about Google My Business right now. पर ये चालू करने से पहले अभी भास्कर जी ने जैसे एग्जांपल दिए, यू नो how actually people search on Google, especially for the near me searches. So अभी हम ऐसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं. So for example, अगर आपका किसी मतलब आपके पहचान वाले किसी में भी आपके सन का, डॉटर का या फिर आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो फिर आप क्या करोगे? और आपको केक चाहिए, तो आप आइदर आप खुद से बनाओगे या फिर आप किसी आपके नीचे जो कोई बेकरी है वहां से आप केक ऑर्डर करोगे, या फिर अभी जो मतलब जनरेशन जो है जेन जी, जेन वाई, वट एवर यू कॉल इट, तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेट अवे गूगल करते हैं कि केक्स नियर मी. ओके, तो ऐसे हम गूगल करके देखते हैं जो भी आपके एरिया का नाम है. I will quickly Google that and see what search results come up. तो अभी हम गूगल पे जाते हैं और let me just Google cakes in कोथरूड. Okay. अभी आपको जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे केक शॉप्स नजर आएंगे, राइट? और ये गूगल मैप है आपका. तो मैं क्या करूँगा कि अभी ये मोर प्लेसेस में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि कौन से केक शॉप्स है जो पहले तो मेरे नजदीक है, और दूसरा मतलब उनको कैसे रिव्यूज मिले हैं, उनके क्या प्रोडक्ट्स है, और ये सारी उनको इंफॉर्मेशन देखूंगा. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो कोई कैरामलास केक शॉप है, सो आई विल जस्ट सी दिस. ओके, अभी इनके अच्छे रिव्यूज है, 62 गूगल रिव्यूज उनको मिले हैं, उनका एड्रेस दिखाई दे रहा है मुझे, उनके शॉप की टाइमिंग दिखाई दे रही है, उनका फोन नंबर दिखाई दे रहा है. फिर उनके जो भी हम रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हैं, तो कैसे केक्स है वगैरह वगैरह, उनका मेनू भी है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन, दिस इज नथिंग बट गूगल माई बिजनेस. इन्होंने उनका गूगल माई बिजनेस पेज बनाया है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, अच्छे से उनके रिव्यूज लाया है, पूरी इंफॉर्मेशन फिल की है, और इसलिए ये उनका पेज यहाँ पे नजर आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा, अभी उनको स्ट्रेट अवे कॉल करके मेरा केक बुक कर दूंगा. तो ये इतना सिंपल होता है. और अभी हम देखने वाले हैं आज की गूगल माई बिजनेस पेज के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और पहले तो वो क्रिएट कैसे करते हैं. तो लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन नाउ. तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज गूगल माई बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज अ फ्री एंड इजी टू यूज टूल जो कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. तो इसमें जो भी फीचर्स है वो स्मॉल बिजनेस या बिजनेसेस को टेलर मेड किए हैं, और उससे आपका जो भी प्रेजेंस है गूगल पे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, इंक्लूडिंग गूगल मैप्स पे. तो ये जो इसका इफेक्टिव यूसेज कैसे होता है कि अराउंड मी सर्चेस. अभी हमने जो एग्जांपल देखा कि केक्स इन कोथरूड या केक्स नियर मी, तो आप ऐसे 15-20 किलोमीटर दूर तो आप नहीं जाओगे ये सर्विसेज के लिए. बीट डॉक्टर, बीट डेंटिस्ट, बीट इलेक्ट्रिशियन, ये आपको आपके घर के नजदीक ही चाहिए होंगे, और इसलिए आप ऐसे सर्च करते हैं कि केक्स नियर मी, इलेक्ट्रिशियन नियर मी. तो ये इन एंड अराउंड मी सर्चेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है गूगल माई बिजनेस. और अभी हम देखने वाले हैं कि इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. पर इससे पहले हम देखते हैं कि ये सेटअप कैसे किया जाता है. तो अभी ये जो लिंक है मैं आपके चैट में पोस्ट करने वाला हूँ. तो ये लिंक आप ओपन करके जो भी गूगल स्टेप्स बताता है वो बस स्टेप्स आप फॉलो कीजिए. बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, जैसे कि वो आपका नाम पूछेगा बिजनेस का, आपकी एड्रेस पूछेगा, आपका कैटेगरी पूछेगा, वगैरह वगैरह. तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और फिर आपका गूगल माई बिजनेस पेज बन जाएगा. दिस इज नथिंग डिफिकल्ट. तो ये मैं आपको लिंक पेस्ट कर देता हूँ चैट में. राइट. तो अभी ये बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये पेज आपका बन जाएगा. पर अगर आपने गूगल माई बिजनेस पेज ऑलरेडी सेटअप किया है, तो अभी हम उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए गूगल माई बिजनेस पेज पे उसको एक्टिव रखने के लिए, और उसको ऑप्टिमाइज करके उससे बिजनेस बढ़ाने के लिए, बेसिकली बिकॉज दैट इज द एंड गोल जो
आप सभी को चाहिए, राइट। तो आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप आपके लैपटॉप से भी कर सकते हैं। या जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू टेल बिफोर दैट इज कि गूगल माई बिजनेस जो है वो आपके जीमेल आईडी के थ्रू ही आप सेटअप कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव अ जीमेल आईडी। इफ यू डोंट हैव वन, क्रिएट वन, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये पहले आप बना दीजिए, और फिर अगर आपका गूगल माई बिजनेस पेज ऑलरेडी बन गया है तो देन नाउ वी लुक एट द बेस्ट प्रैक्टिसेस की क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज द गूगल वेरिफिकेशन। तो गूगल क्या करता है कि गूगल को जो भी गूगल इंफॉर्मेशन शो करना चाहता है उसके प्लेटफॉर्म पे, बी इट गूगल मैप्स, गूगल सर्च पे, तो इट वांट्स टू शो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो इसलिए उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि सच में आपका ही बिजनेस प्रेजेंट है ना उसी लोकेशन पे। तो ये दो तरीके से करता है। पहले तो ये एक आपको पोस्ट कार्ड भेजेगा, जैसे आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर गूगल माई बिजनेस पेज तभी आपको ये पूछा जाएगा, और आपका एड्रेस वगैरह आपको जब आप एंटर करते हैं तो उस पे आपका ये पोस्ट कार्ड मेल किया जाएगा। अगर आपका कोई एड्रेस नहीं है, मतलब अगर आप ई कॉमर्स पे है और आपने एड्रेस आपका एंटर नहीं किया है, दैट इज फाइन। पर आपको that address that you are going to enter for the verification won't show on your Google My Business page, but in any case you will have to verify. तो अगर आपका ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस है तो आप वैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसका। रिसेंटली एक इसमें अपडेट आया है कि कुछ बिजनेसेस के लिए हमने देखा है कि गूगल ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करता है। तो जो कि बहुत ही सिंपल हो गया है अभी। आई एम नॉट श्योर कि ये सभी बिजनेसेस के लिए अभी एप्लीकेबल है, पर कुछ बिजनेसेस के लिए ये ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई होता है। बट सो दीज आर द टू वेज। आइदर आपको एक पोस्ट कार्ड आएगा, तो ये आपको मेल के थ्रू आता है, मतलब आपका कुरियर के थ्रू आता है आपके ही बिजनेस लोकेशन पे। इसलिए जो भी आप एड्रेस डाल रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द राइट एड्रेस, द स्पेसिफिक एग्जैक्ट एड्रेस, so that the postcard reaches you. और इसमें आने में करीब करीब 12-15 दिन ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। तो वंस दिस इज वेरीफाइड, एक बार आपका गूगल माई बिजनेस पेज वेरीफाई होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स आपको ओपन होते हैं। जैसे कि आप रिव्यूज ले सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग आप डाल सकते हैं, इनसाइट्स आप देख सकते हैं, और उसके बाद ही आपका बिजनेस गूगल मैप्स पे विजिबल होगा। So these are few things which are important when it comes to verification. Okay, फिर comes product catalog या फिर सर्विस लिस्टिंग। तो अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका लेदर बुटीक है, मतलब लेदर जैकेट, शॉल्स वगैरह ये बनाते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सा कैटलॉग उनका प्रिपेयर किया है, जिसमें उनके प्रोडक्ट के फोटोज है, उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई लिंक है किसी वेबसाइट पे जाके बाय करने की, तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी प्राइस, उसको डिस्काउंट जो भी है वो सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही पेज पे अंडर वन रूफ आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, एंड इट इज इजी फॉर द यूजर्स टू लुक अराउंड। सो फिर उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन है, तो गूगल आपको पूछेगा ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके शॉप के टाइमिंग्स क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, वेबसाइट, व्हाटएवर, डिस्क्रिप्शन, सेक्टर्स। सो ये इंफॉर्मेशन फिल करना जरूरी है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे तभी आपका बिजनेस एक्टिव लगेगा, आपका बिजनेस कंप्लीट दिखेगा। तो ये जरूर आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। फिर आता है पोस्ट। तो आप, जैसे आपको पता ही होगा कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट ऐड करते हैं, तो सिमिलरली गूगल माई बिजनेस पे भी आप ये पोस्ट ऐड कर सकते हैं। बस और उसमें आप ध्यान रखिए कि ये इसका पोस्ट साइज अलग होता है। तो ये जो पोस्ट साइज है, यहाँ पे हमने जो लिखा है 1200 बाय 900 पिक्सल्स, ये आप नोट कर लीजिए। तो जब आपके जो फोटोज है वो आप इस साइज में बनाते हैं तो ही वो अच्छे से दिखते हैं गूगल माई बिजनेस पेज पे। वरना वो आप, अगर आप
आपने कोई और साइज में बनाया है तो हो सकता है कि वो फ्रेम के बाहर चला जाए आपका कंटेंट और वो अच्छा नहीं दिखता। तो इसके लिए आप एक वेबसाइट है canva.com, इस पे आप बना सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एक तो वो फ्री है और इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू मेक अट्रैक्टिव डिजाइंस फॉर योर बिजनेस। Just a minute over here, Sahil. Yeah. So if you are interested, so there is a lot of data over here that we are sharing, sizes and etc. And if you are interested to get this information, so you need not take down notes or anything at this moment. You can keep listening to us, and if you want this presentation, a link to this presentation, a recording of this, we will share a phone number, WhatsApp phone number. You can join us over there, and we will share this video with you so that you have it even going forward. So this will help you when you are actually designing what should be the size and so on. So, Right, that would be great. go ahead, Sahil, sorry. Yes, so in this post, like I said, you can design them from canva.com, and you can also add some buttons like call now या sign up, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और Google also allows you to make different kinds of posts. तो अगर आपका कोई ऑफर है तो आप एक ऑफर का पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। कोई इवेंट है आपका, वेबिनार टाइप, तो वैसे आपका पोस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि ऑफर वाला पोस्ट कैसे दिखता है। उसका ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं ऑफर का, रिडीम ऑनलाइन, ये से कुछ लिंक आप डाल सकते हैं वहाँ पे। फिर अगर आपका कोई इवेंट है, जैसे कि वेबिनार होता है, तो आप आपका इवेंट भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इट विल इंक्लूड द टाइमिंग्स एंड ऑल द अदर डिटेल्स। उसके बाद फिर फोटोज, लोगो एंड हेडर इमेज। तो ये आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। मतलब आप फेसबुक पे जैसे आपका खुद का प्रोफाइल होता है, तो वैसे ही आपके बिजनेस का भी प्रोफाइल होता है। तो उसी उसके लिए आपका लोगो होना जरूरी है, और लोगो आपके प्रोफाइल इमेज में ऐड होता है। तो उसके लिए गूगल ने एक अलग ऑप्शन दिया है लोगो ऐड करने का। फिर कवर इमेज भी है ऐड करने के लिए। तो ये साइजेस आप भास्कर जी ने जैसे बताया कि आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसका शेयर होने वाला है, तो वहां से आप ये साइजेस वगैरह बस ध्यान में रखिए कि इस साइज में आपको ये इमेजेस बनाने हैं। और भी आप बहुत सारे फोटोज ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपके बिजनेस के इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपकी टीम, आपके प्रोडक्ट्स and so on and so forth. Make it look attractive, make your page very vibrant and visible, so that more and more people are attracted to your page and they finally give you the orders. तो और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी मतलब आप कुछ ना कुछ हर हफ्ते गूगल माय बिजनेस पेज पे करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी आपका पेज एक्टिव दिखेगा, तभी आपका पेज विजिबल होगा, और आपकी वैसे रीच बढ़ेगी। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कीप डूइंग दीज थिंग्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली एवरी वीक। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर ऑफ गूगल माई बिजनेस। तो ये आपको एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी अलाउ करता है। तो आपने अगर देखा होगा कि कोई भी ट्रेडिशनल वेबसाइट जो होती है, तो उसको बनाने में करीब करीब 15-20 हजार या उससे भी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो गूगल ने क्या किया है कि एक सिंपल टेम्पलेटेड सिंगल पेज वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली भी है, वो बनाने का आपको एक ऑप्शन दिया है। और ये एक नॉन प्रीमियम डोमेन होता है, जैसे कि .business.site ऐसे करके इसका डोमेन आता है। तो ये भी हम देखने वाले हैं आगे जाके कैसे ये वेबसाइट एक्चुअली दिखता है। पर इसमें आप आपके कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स आर नथिंग बट हाउ पीपल आर सर्चिंग फॉर योर बिजनेस। तो जैसे अगर मेरा बेकरी है, तो मे बी पीपल विल सर्च बेकर्स इन पुणे, बेकर्स इन कोथरूड, या ब्लैक फॉरेस्ट केक इन कोथरूड, समथिंग लाइक दैट. So make sure to add all these keywords, and Google will also tell you which are the keywords by which people are searching for you. So ये भी हम आगे जाके देखने वाले हैं. Yes, this is insights. अभी insights में क्या होता है कि Google आपको डेटा देता है कि आपको लोग पहले तो कहाँ से सर्च कर रहे हैं, कितने सर्चेस हो रहे हैं आपके बिजनेस के अराउंड,
और ये जैसे मैंने बताया कि कौन से कीवर्ड्स के थ्रू सर्च हो रहा है, तो नाउ अपग्रोथ इज अ डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ हैकिंग कंपनी, सो इन दैट अभी लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, तो ग्रोथ मार्केटिंग दिस इज अ कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे, तो this is how people are searching, and you'll be able to see how many people also searched for you and which way they took to search. अभी यहाँ पे आपको और भी डेटा मिलेगा, जैसे कि आपके गूगल मैप बिजनेस पेज पे आके लोगों ने क्या किया, मतलब कितने लोगों ने आपका वेबसाइट विजिट किया है, कितने लोगों ने डायरेक्शंस पूछे, कितने लोगों ने कॉल किया एक्चुअली आपको, और ये कहाँ से हो रहा है, मतलब कौन से पिन कोड से आपको ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं या ज्यादा विजिबिलिटी है आपकी उन पिन कोड्स में, ये भी गूगल आपको बताएगा. सो दिस इज अबाउट गूगल माई बिजनेस. ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी हमने बात किया है, इसके बाद हम बस एक डेमो देखने वाले हैं, की स्टडी देखने वाले हैं कि कैसे एक्चुअली ये होता है, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं. तो एक्चुअली आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा. So let me just open a Google My Business page now, and then I'll show you how it actually looks. Okay, so just to take an example before we go ahead and get into the case study and all. So over here, this is a Google My Business page, and this is exactly how your Google My Business page will also look. तो इसमें आपको ये ऐसे होम पेज दिखेगा, जिसमें कि ओवरव्यू मिलेगा आपको, सारे आपके गूगल माई बिजनेस के जो फीचर्स है उसका. फिर उसके बाद आता है पोस्ट. इसमें आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं एक्चुअली. बस आपको ये बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अलग अलग पोस्ट ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी ऑफर है तो ऑफर वाला पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं. अगर कोई अपडेट देना चाहते हैं बस आप, तो आप फोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं वो पोस्ट के बारे में. इवेंट्स है तो सेम वे जैसे आप फेसबुक पे करते हैं वैसे आपको यहाँ पे करना है, बट जस्ट मेक श्योर दैट द साइजेस आर राइट. फिर इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है, so that your business is updated, the latest information is visible. अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे बिजनेस आवर्स ऐड ही नहीं किए तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपको किस टाइम में कॉल करना है या आपका बिजनेस कौन से टाइम में ओपन है. तो इसलिए बिजनेस आवर्स ऐड करना जरूरी है, एंड सिमिलरली फॉर ऑल द अदर थिंग्स. तो these are insights जैसे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ में इतने सर्चेस हुए हैं आपके बिजनेस के अराउंड, और मतलब कैसे कस्टमर्स आपका बिजनेस व्यू कर रहे हैं, गूगल मैप्स पे कितने व्यू कर रहे हैं, सर्च में गूगल सर्च में कितने कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या एक्शन ली है लोगों ने, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की है, कितने लोगों ने आपको कॉल किया है, कितने मैसेजेस किया है, whatever, so on and so forth. तो ये आपको डायरेक्शंस भी मतलब डायरेक्शन रिक्वेस्ट भी दिख रहे हैं, and it gives all kinds of data to you. So just you can just go through this data, and then probably you can figure out कि कहाँ से लोग आपको सर्च कर रहे हैं और कैसे सर्च कर रहे हैं, and it will help you make some business decisions going forward. फिर रिव्यूज. अब अभी अगर आपको कोई रिव्यू लेना है तो कैसे होता है कि जो भी बिजनेस को अच्छे रिव्यूज आते हैं तो people tend to go over there and give them they tend to call that particular business. तो इसलिए आप अच्छे से आपके रिव्यूज बढ़ाइए. आपके जो भी वेल विशर्स है, फ्रेंड्स फैमिली है, तो उनको आपको क्या करना रहता है कि बस एक लिंक सेंड करना रहता है. तो ये लिंक कैसे सेंड किया जाता है, जस्ट गो टू योर दैट होम बटन. आप जैसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे एक शेयर रिव्यू फॉर्म का ऑप्शन आता है. वंस यू क्लिक ऑन दैट, गूगल विल गिव यू अ लिंक. सो ये लिंक बस आपको कॉपी करना है और आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी आप भेज सकते हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली हैप्पी कस्टमर्स को, और उनको कह सकते हैं कि हमें अच्छे रिव्यूज दीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट
good reviews. Those reviews will be visible on Google, and the stars will also be visible, like 4 stars, 5-star rating. So yeah, get good reviews. फिर मैसेजेस भी है, तो आप मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं. लोगों ने जो भी आपको मैसेज किया है, आपको डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर सकते हैं. यू कैन गेट इन टच विद पीपल. फिर फोटोज है. फोटोज में जैसे हमने देखा कि आप आपका लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कवर इमेज ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस गूगल देता है कि वीडियो है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर, टीम, ये सारे आप फोटोज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. फिर प्रोडक्ट कैटलॉग भी आप बना सकते हैं यहाँ पे. जैसे हमने पहले बात की थी कि आप आपका हर प्रोडक्ट का फोटो ऐड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, उसकी लिंक, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. नाउ दिस इज द वेबसाइट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. तो ये ऐसे टेम्पलेटेड वेबसाइट रहता है, तो इसमें आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. जो भी थीम्स अवेलेबल है उसमें से ही आपको एक थीम चूज करना पड़ेगा. और फिर आपको आप टेक्स्ट जरूर एडिट कर सकते हैं उसमें. तो आपका बिजनेस का नाम, आपका डिस्क्रिप्शन, आपकी अबाउट अस एंड सो ऑन. सो ये आप इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट कीजिए. बहुत ही सिंपल है ये वेबसाइट बनाना. और आप वेबसाइट बना के आप वेबसाइट की जो लिंक है वो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो एक ही इसमें उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके बिजनेस की. तो हम देखते हैं कि ये वेबसाइट एक्चुअली कैसे दिखता है. सो ये अभी deAsra फाउंडेशन का गूगल माय बिजनेस वेबसाइट है. और यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं deAsra फाउंडेशन को. यहाँ पे उनका बैनर है. फिर उन्होंने क्या क्या अपडेट्स डाले हैं, तो ये सारे अपडेट्स भी यहाँ पे विजिबल है उनके. सो दिस इज अबाउट deAsra फाउंडेशन कि deAsra एक्चुअली क्या करता है. यहाँ पे आप उनके जो सर्विसेज है उसके भी लिंक्स ऐड किए हैं. तो मैं डायरेक्टली ये लिंक्स पे क्लिक करके उनके वेबसाइट पे जा सकता हूँ. ये दिस इज द गैलरी, द फोटो गैलरी. फिर कॉन्टैक्ट अस, ये एड्रेस है. डायरेक्टली गूगल मैप्स को ये लिंक होता है. फिर बिजनेस आवर्स एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. तो ये ऐसी एक सिंपल सिंगल पेज टेम्पलेटेड वेबसाइट आप बना सकते हैं. अगर आपको you only want this much of information. Of course e-commerce के लिए अगर आपको अलग वेबसाइट लगेगा, बट अगर आप ऐसे सिंपल वेबसाइट चाहते हैं तो थ्रू गूगल माय बिजनेस यू कैन गेट इट एब्सोल्युटली फॉर फ्री. ओके, सो दिस वाज अबाउट गूगल माय बिजनेस. ये इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें. अभी हम एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी भी ले सकते हैं. फूड बिजनेस का हम केस स्टडी लेंगे. तो इसमें सॉरी टू कट यू, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, तो वो हम पहले ले सकेंगे या should we go for the श्योर, case? लेट्स टेक द क्वेश्चंस. ओके. अथर्व जी ने पूछा है कि उनकी ई कॉमर्स, मतलब उनका बिजनेस ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स वेबसाइट है शायद उनकी, तो उनको गूगल माय बिजनेस यूजफुल हो सकता है, या अगर हो सकता है तो कैसे यूज करना चाहिए उन्होंने गूगल माय बिजनेस. तो गूगल माय बिजनेस जैसे हमने पहले बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नियर मी एंड अराउंड मी जो सर्चेस है उसके लिए वो बहुत ही इफेक्टिव होता है. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप गूगल माय बिजनेस पेज बनाओ ही मत. तो इसका मतलब ये नहीं होता. आप जरूर ये बना सकते हैं बिकॉज इट इज इट डजंट टेक एनी मनी. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और गूगल पे जो भी सर्च कर रहा है तो आपकी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो उधर विजिबल होगी. आपके रिव्यूज एटलीस्ट वहाँ पे विजिबल होंगे कि कैसे ये ई कॉमर्स साइट है, ये इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं. और वहाँ पे आप मतलब इवन इफ इट इज नॉट योर even if people are not going to that location to buy those products, but you can create a product catalog on Google My Business. So you can link it to your e-commerce website so people can actually go there and buy it. So of course it is necessary that you create a Google My Business page, and these are the ways in which it can help you. So do create it and get more reviews, create a product catalog, and you can see your business grow. Sahil, you may also want to talk about the other side, like when people globally want to order
say cake in a certain area and Right. This is actually very interesting. So basically, just to give you an example, we had an entrepreneur with us some time back, and he has a Google My Business page, and he was telling us that he got an order from Canada. Now, what had happened was from Canada was searching that they wanted to actually send a cake to their relative and who was living in Sinhagad Road area. So they just searched in Canada. Maybe they would have searched like cakes in Sinhagad Road or something like that. And they naturally that person was there on Google My Business, and his business popped up over there. And that person actually called him from Canada, and he booked a cake order, and that's how we got a business from abroad. So that's an interesting case study. ऐसे भी हो सकता है, तो you know you should create a Google My Business page. प्रमोद जी ने पूछा है कि how can we enter main branch and sub branches in Google My Business? Right. So this is of course you can do it. उसमें क्या करना रहता है, we won't get into the details because it is a process. थोड़ा लंबा process है वो, but I can tell you that you can definitely do it, and you can share your email address with us, so we can send you a video on how it is to be done. If we get into it right now, it will take a lot of time. So we have done this before, that we have sent the video to such businesses who have like a main branch and then sub branches and all. So we'll send you a video. Just give us you can send Aishwarya ma'am your email address, and we'll send you that video on how to create it. Yes, and we are all anyways going to share the WhatsApp number there also. Yeah, that's where we can send the link as well. Yeah, no problem. तो प्रमोद जी, आप आपका ईमेल आईडी जो है वो मुझे भेज सकते हैं यहाँ पे चैट पे या अदरवाइज। दूसरा क्वेश्चन है साहिल अश्विनी जी ने पूछा है कि इस वेबसाइट के लिए हमें जीमेल अकाउंट लिंक करना जरूरी है क्या फॉर द वेबसाइट पार्ट? No, so basically if you want to create a Google My Business page, ये हमने वेबसाइट Google My Business page के थ्रू ही बनाई है, तो Google My Business page बनाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट होना बहुत नेसेसरी है, उसके अलावा आप कर ही नहीं सकते। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, एंड ये वेबसाइट तभी हो पाएगी जब आपका Google My Business page बनेगा, एंड Google My Business page बनाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट चाहिए। ग्रेट। ओके, सो आई गेस हम केस स्टडी की ओर जा सकते हैं। अभी तक कोई और क्वेश्चन नहीं, सो केस स्टडी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक फूड बिजनेस का केस स्टडी देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, सो ये अभी बिजनेस है इनका, पैठण में बिजनेस है, और ये काफी टाइम से ये गूगल माय बिजनेस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने एक अच्छा जो चीज किया है, तो एक तो वो हर हफ्ते एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी करते रहते हैं उनके पेज पे, और इनके जो भी कस्टमर्स इनके रेस्टोरेंट में आते हैं सभी से वो ये लिंक शेयर करके उनका रिव्यू ले लेते हैं। तो आप अगर उनके रिव्यूज में जाओगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज आपको दिखने को मिलेंगे, एंड दीज आर लाइक वेरी रिसेंट रिव्यूज जो आप पढ़ सकते हैं। तो दे हैव tons of reviews, and that's how they got visibility, और उनको वहां से ही orders आते हैं। मतलब when people are searching for any restaurant in Python, that's how they are getting orders. I mean, people are directly calling them, booking whatever things they want, ordering online. तो ये सारे उनको activities open हुए हैं just by getting more and more reviews on Google My Business and staying active. तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम थिंग। और ये ऐसे कोई जादू नहीं है कि आपने 1 महीना किया और आपको ऑर्डर्स आने चालू हो गए। इट इज अ प्रोसेस, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर महीने करनी पड़ेगी, एंड इन द लॉन्ग रन आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो दिस इज अ मैराथन, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट। तो जस्ट बी पेशेंट एंड कीप डूइंग एक्टिविटीज। तो हमने जैसे बात किया उन्होंने वही किया है, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। उन्होंने एक्टिव रहे हैं वो हर हफ्ते,
और उन्होंने रिव्यूज अच्छे से बढ़ाए हैं उनके, and that's how they are getting business through Google. So you can do the same, and yeah, deAsra is there to help. राइट साहिल, जो हमने जो वेरिफिकेशन की बात की, गूगल में बिजनेस अकाउंट के वेरिफिकेशन की, उसके बारे में मेरे ख्याल से संध्या जी ने और देवीदास जी ने 2 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। उनका, संध्या जी का क्वेश्चन है कि उनको गूगल इज रिव्यूइंग योर सजेशन, ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? तो दिस इज तो 2 तरीके से आता है। एक तो गूगल उनके आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करते हैं वो भी रिव्यू करता है, जो भी आप पोस्ट डालते हैं वो भी रिव्यू करता है, एंड इट टेक्स टाइम। समटाइम्स होता है ऐसे कि गूगल को मतलब उनके पॉलिसीज रहते हैं कुछ ना कुछ, और इफ वी डोंट comply to them, even if it is like here and there, then they take a lot of time to review. So yeah, we have also experienced that, and it is like we can't do anything about it, but it is the problem, or that time Google takes to review it. ओके। और देवीदास जी ने पूछा है कि किस केस में या कौन से रीजन से गूगल में बिजनेस का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? Yeah, there could be n number of reasons. ये गूगल की पॉलिसीज ही होते हैं कुछ ना कुछ। एक रीजन होता है कि कई बार डुप्लीकेट पेजेस हो जाते हैं। गूगल सीज दैट आपके नाम से 2-3 बिजनेसेस है, उसका मतलब गलती से आपने पहले भी एक बिजनेस क्रिएट किया होगा, वो भूल गए होंगे, तो और एक बिजनेस आपने क्रिएट किया होगा, तो ऐसे गूगल अंडर डुप्लीकेसी आपका बिजनेस सस्पेंड कर देता है। फिर अगर आपने कोई ऐसे देयर आर थिंग्स लाइक मे बी अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट व्हिच आर बैंड कैटेगरीज, अगर आपने उस टाइप के कोई इंफॉर्मेशन ऐड की है तो फिर भी वो सस्पेंड कर देता है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। आई मीन वी कैन, उसकी पॉलिसी आपको पढ़नी पड़ेगी, बट as long as you like do everything whatever we have discussed right now, it won't get suspended so easily. Right. Okay. I agree. So we must understand what are policies Google must be having for the approval or suspension of the account, right? ओके। और तुषार जी ने पूछा है कि क्या हम कोई रिव्यूज हाइड कर सकते हैं ताकि अनवांटेड कमेंट्स कोई पढ़ ना सके? इफ लाइक is there a possibility of hiding any particular review? I don't think so. Google, I don't think allows you to hide your reviews. You can try doing it, but it's not possible to hide reviews. The best thing is that you get more positive reviews, because it's if you think from Google's perspective, the idea is to give users a democratic view of things. So if someone is giving a bad review, then try to get more positive reviews. That is how you can do that. Okay, great. I guess we can go ahead, Bhaskar. Okay, Bhaskar, over to you. Yeah. So now what I will do is I'll invite my colleague Sumi to talk about social media marketing, especially about Instagram, Facebook, and Instagram. Yeah, and Sumi is kind of an expert on both these platforms. So over to you, Sumi. Hi, good evening, everyone. So as Bhaskar said, my name is Sumi, and I am someone who spends way more than 1 hour on their phone. So yeah, I will be able to teach you guys a little bit about Facebook and Instagram from my end, how much ever I know. But by the way, how many hours do you spend? I think in 24 hours for sure, around 15 to 16 hours I'm on my phone. Yeah, so I guess only the sleep time would be the exception. So I mean, I sleep late only because I'm wasting time on my phone. So yeah. Okay, let's not waste time because it's already 5. So I'll quickly get into it. What we'll do is I'll try, and because Facebook and Instagram is fairly similar, I'll try and talk about both of them simultaneously. I'll also show you some tips and tricks through on Facebook and Instagram
how much ever is possible in this time frame, and I'll try my best to convey the messages. So I'll just share my screen. Yeah. So first thing first, I will go, as I said, मैं दोनों के बारे में simultaneously बात करने वाली हूँ, Facebook और Instagram. तो Facebook और Instagram के बारे में सब जानते हैं, but still जो नहीं जानते हैं, I'm assuming minority people जिनको नहीं पता है, सिर्फ उनके लिए quickly, what is Facebook for business? Facebook for business exactly Facebook जैसा ही है, except the fact कि Facebook जो होता है, Instagram जो होता है, आपके पर्सनल प्रोफाइल के लिए इट्स लाइक अ सोशल प्लेटफॉर्म आपके पर्सनल यूज के लिए, बस. बट जो फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस होता है वो होता है आपके एग्जैक्टली सेम वे बट फॉर बिजनेस. एंड इवन लाइक ऑल द बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस है, एवरीवन इज सजेस्टेड टू यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम because these are like one of the most powerful tools today to grow your business, और आपका online presence बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा powerful tool है आज के डेट में. So let's move on quickly. मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया है. अगर आप में से किसी ने भी पेजेस नहीं सेटअप किए हैं तो यहाँ पे एक लिंक शेयर किया हुआ है मैंने. इफ यू स्क्रोल, I'll show you. मैंने इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक शेयर किया है, तो आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सेटअप कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. Facebook will give you step by step questions. आपको बस वो आंसर फिल अप करना है and then your page will be ready. So I mean you will be able to do it very easy. मैं बस quickly I want to delve into the advantages of using both Facebook and Instagram for business. मैं आपको बस बता देती हूँ. आपको लगेगा कि सब बोल रहे हैं कि इतना पावरफुल टूल है, ये है वो है, बट क्यों है ऐसा? क्यों है कि बिजनेसेस को आज के डेट में सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना ही चाहिए? तो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या रीजन या एडवांटेजेस बोल लो आप, बिकॉज ऑफ विच एनी बिजनेस कैन ग्रो इन लाइक अ जिफी. सो फर्स्ट वेरी ऑब्वियस रीजन इज आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे आप आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को नॉट जस्ट इन अ लोकल वे, नॉट जस्ट इन अ नेशनल वे, बट एज साहिल सेड, एक कस्टमर को कनाडा से ऑफर कॉल आए तो इंटरनेशनल कस्टमर्स भी बनाने के आपको चांसेस मिलेंगे. तो इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेटफॉर्म दैट कैन ग्रो योर कस्टमर बेस इन लाइक नो टाइम. So that is one like really important factor. Another thing is obviously businesses जब grow होते हैं तो सिर्फ ये reason, मतलब grow हम लोग सिर्फ customers या leads को बढ़ा के grow नहीं करते हैं, हमको हमारे similar businesses और दूसरे businesses से भी network करना होता है, so that और business awareness बढ़े and आपका knowledge बढ़े and काफी सारी चीजें होती है. तो आप Facebook और Instagram use करके सिर्फ कस्टमर बेस नहीं बढ़ा सकते, बट आप बेसिकली अपना पूरा नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं जस्ट टू ग्रो in a 360 degree way. So obviously it's a great platform to do that also. Third pointer is lower your marketing expenses. Now this is one of the most important advantage of using Facebook and Instagram, and I would like to explain this with the help of an example. So just compare between a traditional advertising and digital advertising. तो traditional advertising में क्या होता है आपका? जैसे ऐश्वर्या ने स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द इवेंट के वेबिनार के बिगिनिंग में जो बात किया था उन्होंने कि ट्रेडिशनल जो पहले जमाने में फ्लायर्स होते थे या न्यूज़पेपर एड्स होते थे या बिलबोर्ड्स ऐड होते थे, उनको हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं. एंड अभी ऑब्वियसली जो भी डिजिटली आ रहा है, जो भी इंटरनेट पे एड्स आप देखते हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, कुछ भी हो गया, तो दैट वुड कम इन द डिजिटल पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. नाउ अगर आप ट्रेडिशनल वे से, जो अभी भी वेरी मच इन है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, अब अभी भी जो भी आप टीवी पे ऐड देखते हो वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में ही आता है, या रेडियो पे जो ऐड सुनते हो वो भी ट्रेडिशनल में ही आता है. तो अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाते हैं तो मैं, इफ आई हैव अ बिजनेस, मैं ट्रेडिशनल वे में उनको बोलूंगी कि मुझे बिलबोर्ड पे मेरा ऐड बनाना है. So I go to them, we discuss I tell them कि okay, this is my plan, this is my product. अब मेरे को इस पर्टिकुलर रोड पे, यहाँ पे बिलबोर्ड पे मुझे अपना एड लगाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि बिलबोर्ड पे एड लगाना, न्यूज़पेपर में एड लगाना, रेडियो पे एड डालना, ये सब कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और प्राइसी होता है. So I'll do that. तो a lot of planning,
process goes into this, and finally मेरा billboard पे ad लग जाता है. अभी बस this is it, this is the end of my traditional advertising. अभी मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो ad देख के कितने लोगों ने मेरा product खरीदा, वो ad कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने even interest दिखाया. I have no idea. I mean, I just know कि billboard पे ad लग गया, मैंने कुछ 1-2 लाख रुपए दे दिया, and that's it. Compared to now, if you compare the same thing to digital advertising, first of all, Facebook और Instagram पे आपको ad run करने में कोई पैसे नहीं लगते. I mean, Facebook और Instagram पे आप जब enter करते हो तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता. It's free to start a business page there. So उधर आपका budget कट जाता है. Second thing is, आप जब ad run करते हो, you can start from as low as 80 rupees or 100 rupees. So you can run that ad for 2 to 3 days, in fact, that 100 rupee ad. तो वो एक तो आपका बजट आप कंट्रोल कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज, आप जब एड रन करोगे तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपके एड्स देखे, कितने लोगों ने परचेज किया आपके एड को देख के. अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, अलग अलग टारगेट आप सेट कर सकते हो कि भाई अब फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल बुटीक का बिजनेस है, wherein I sell only traditional clothes, traditional Indian clothes. तो probably मेरा target audience हो सकता है majorly women होंगे, women above say 25 years old. So I can target literally that particular age group. I can target literally just women and not men. तो मैं ये सब चीजें optimize कर सकती हूँ और अपना ad जो है बहुत ही मतलब typical narrow down कर सकती हूँ कि इसी particular audience को मेरा ad दिखेगा. So ये आगे पीछे करके मैं अपना बजट खुद से कंट्रोल कर सकती हूँ, which is in the end which lowers my marketing expense to a very sensible way. So this is one of the biggest example that I wanted to tell you all about it. Fourth advantage is target audience, जो मैंने अभी just आपको बताया कि आप अलग अलग तरह से अपने audience target कर सकते हो और आप एक ही टाइप के ऑडियंस नहीं मल्टीपल ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हो. आप चेकआउट कर सकते हो कि किस टाइप का ऑडियंस आपके काम कर रहा है आपके लिए. लाइक एन ए/बी टेस्टिंग आप कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी. ऑब्वियसली अगर आपका ब्रांड पूरे ग्लोबली रीच आउट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रहा है, तो लोग आपके ब्रांड्स को पहचान रहे हैं, ब्रांड को पहचान रहे हैं. एंड that way, I mean, your brand will go, people will start knowing, and the loyalty will itself grow. So these are like one of the most important advantages of using Facebook or Instagram for business. There are obviously hundreds more, but these are I think are the most important things to focus on when it comes to talking about the advantages of these two channels. So moving on, we'll quickly go to the best practices of Facebook. ये मैं आपको Facebook का ही एग्जांपल देके बताती हूँ. I'll just show you how I'll show you on Facebook. Yeah. So firstly when I'm talking about Facebook here, I'm talking जब आपका पेज आप सेटअप करते हो तो पहली चीज जो Facebook आपको बोलता है या even Instagram आपको जो मांगता है is the profile picture. Now यहाँ पे मैंने दो examples भी share किए, if you can see on your screens. One is Nike, one is by Pantaloons. So their profile pictures are their logos, as simple as that. And similarly अगर आप पेज पे देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको deAsra फाउंडेशन का पेज अभी शेयर कर रही हूँ. उन्होंने भी इनका लोगो deAsra का ही लोगो डाला है. So best practice, first thing when you're setting up a profile picture either on Instagram, Facebook or any other channel, the profile picture should always be your logo. There's a size, उस साइज के आगे पीछे Facebook का नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होता है आपका प्रोफाइल पिक्चर कट जाता है and it looks not right. तो यहाँ पे मैंने सारे साइजेस शेयर किए हैं, तो जब आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर होगा तो you can pick up these sizes and you can create it. So ये हो गया हमारा प्रोफाइल का डिस्कशन. Now Facebook पे क्या होता है, Instagram पे you're just done with posting one profile picture and you're done. But Facebook पे there's something called a cover image, as you can see here, and which is the biggest thing that you see. The first thing that you see in entering Facebook is the cover image. So cover image obviously is one of the most important part that draws attention of your audience. So now what should your cover image be? So again यहाँ पे I'm showing you the example of Nike and Pantaloons.
दो तरीके हैं करने के. There are multiple ways, but I'm just showing you two ways out of them, the easiest things to do when you're setting up a cover page. So now what Nike did is they just added their brand tagline. So because Nike is such a big brand, everyone knows it. The moment they look at it, just this also, they would know ki anyone would know ki ye Nike ka tagline hai. So that's all Nike did, and it really works for them. Perfect. When it comes to pantaloons here, I'll increase the screen size in case you can't see. Yes, so when it comes to pantaloons here, इन्होंने क्या किया है? This particular cover image was set up when I think COVID धीरे-धीरे lockdown थोड़ा खुल रहा था and malls were opening up. So very smartly, what Pantaloons did was they put a mask on this model's face, and they just mentioned a line that it's very safe. You can come and shop with us, because obviously people were a little scared to go out. So this is like a very smart move to do that. What deAsra did recently is, sorry, give me a moment. What deAsra did is, because Social Champ, today's Social Champ, and we have been promoting the event for you to join and know about it. We posted that this event is coming up, come and join with us. So this is how we are promoting. So you should also keep changing your cover image monthly or weekly, whatever suits your time schedule. So what we do is, whenever there's an event, we try and post a cover based on that event, so that जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि ओके नया इवेंट आ रहा है, तो कवर देख के उनको रियलाइज हो जाएगा कि ठीक है फाइन, वी कैन जॉइन द इवेंट अगर हमारे इंटरेस्ट का है तो. So these two are like one of the most important things that that you should take care of. Also cover image का भी size होता है जो यहाँ पे मैंने mention किया है. You should not go beyond or like lesser than this size. Stick to this size, and then it will fit your cover image ka size perfectly. So these are the two things that you should always take care of when you're setting up your Facebook page. Next thing, हमारा profile setup हो गया, हमारा cover image setup हो गया. अब next thing that comes is the CTA or call to action. Now CTA is or call to action is exactly what the sentence says, call to action. So there's a purpose. हम जो भी कर रहे हैं social media पे, हमारा एक purpose है, right? We are not just सिर्फ हमारा business का नाम बनाना, okay, it's like one reason, but ultimate purpose किसी भी business का is the profit making. So obviously I want my customer to in the end to purchase from me or take the service from me if I have a service product. So how do they take it? How do they purchase the product, or how do they take my service? उसके लिए there's something called a button. तो हमने ये फोटो डाल के हमारे ब्रांड के बारे में तो बता दिया. अब क्योंकि probably you get interested looking at it and you want to take the service. So how do you do it? Your next question will be, हाँ ठीक है, मतलब ये देख लिया, अभी मैं कहाँ से लूँ सर्विस? तो इसीलिए there's something called a call to action जो आपके पोस्ट में भी होना चाहिए हर जगह. So पोस्ट में आप कैसे डालोगे call to action? Whatever post you're creating, in the end you should say, okay, XYZ about my product, and in the end you should mention, probably आप link दे दो आपके website का, या फिर WhatsApp number दे दो, या फिर आप बोल सकते हो कि please come and message me on my Facebook messages only if you want to purchase from us. This is call to action. So when you're setting up a page, here also there's something called a CTA button, जहाँ पे आप call to action डाल सकते हो. तो यहाँ पे क्योंकि हम सोशल चैम्प प्रमोट कर रहे थे, तो हमने एक साइन अप का बटन डाला. तो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस बटन, दैट्स व्हाई आई कैन सी द एडिट ऑप्शन. आपके पेज पे भी आप एडिट ऑप्शन देख सकते हो, वहां पे इतने सारे एडिट बटन के ऑप्शन आते हैं आपको कॉल टू एक्शन के. तो यहाँ पे फॉलो बटन है. आपको अगर आपका कुछ और इंटेंशन नहीं है फॉर द टाइम बीइंग पेज का, यू जस्ट वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स, आप यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन डाल सकते हो. एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, यू कैन चूज व्हाटएवर सूट्स योर बिजनेस इंटेंशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. यू कैन यूज दैट. And sign up आप डालोगे तो you can add some links also to your website to people to purchase from your website or whatever your need is of the business. So this is what a CTA means, or call to action means.
So yeah, so your profile is set up, your cover page is set up, and your call to action button is set up. By the way, call to action button and cover page, these two things are not there on Instagram, so you don't have to worry about all those things on Instagram. You just have to worry about the profile picture. Yeah, so these things are set up. Now next thing that comes up is your Facebook page is completely set up now. Next thing that comes up is to start with the content. Start posting the content or start creating the content. So how will you create a content? So there's something called content bucket that we have created. Content bucket से क्या होता है? It makes your job very easy to किस टाइप का content डालना है. So otherwise you will be like every day you will be like कि आज क्या डालें, कल तो ठीक है ये हो गया, अब आज का क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है. तो instead of getting in that circle, what you can do is you can plan your content in advance. Now how will you plan your content in advance is how this is how the content planner works. So before writing any content, आपको पहले क्या करना चाहिए? आपको पहले content bucket बनाना चाहिए आपके business का. तो for example मैंने जैसे बोला example में कि मेरा अगर कोई boutique business है wherein I sell traditional Indian wear clothes. So अब मुझे उसके लिए content planning करना है. So how will I do it? First thing I'll do is make my content bucket. So content bucket will contain all the kind of topics जिसके ऊपर मैं कंटेंट लिख सकती हूँ. So one topic could be latest designs in 2022 in Indian wear, or what are celebrities wearing in 2022 weddings, and these kind of topics. ठीक है. Once I plan out these topics, like I'll be try and create around 10 to 15 content buckets. So हमारे पास एडवांस के लिए भी फ्यूचर के लिए भी काफी सारा information या topics रहेगा, तो we don't have to put so much brains into it. And once that is done, we'll pick out some 3-4 content topics for the month or for the week, जो भी आपको suitable लगता है, you can do that, and you can start working on your content. So day wise you can set up. If you think Monday works the best for you, you should pick up Monday. If you think like Monday, Tuesday, Wednesday works best for you, so based on that, I mean, you can plan out कौन से days को आप post करना चाहते हो. It's not necessary to post every single day of the week. So you can plan out your day. You can plan out your theme or content bucket here. Format और objective और कुछ नहीं है. Format मतलब Facebook और Instagram आपको 3 से 4 टाइप के फॉर्मेट्स देता है पोस्ट करने के लिए. वन इज द इमेज काइंड ऑफ फॉर्मेट, जिसमें आप सिर्फ एक इमेज डालते हो, नीचे कैप्शंस होते हैं. वन कुड बी अ वीडियो फॉर्मेट, वन कुड बी अ रील फॉर्मेट. सो दीज आर लाइक मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट जो आप यहाँ पे डाल सकते हो. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन मेंशन व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट यू वांट. ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कोर्स, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोग आपके पेज को फॉलो करें, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव फॉलो लिख सकते हो. अगर आप चाहते हो कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो आप ऑब्जेक्टिव परचेज लिख सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट टाइप एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव योर बिजनेस इज सीकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर पोस्ट. So this is how a content planner works. Any questions here? अगर मैं थोड़ा fast जा रही हूँ, तो you guys can please tell me. I'll slow down and try and explain better. So me actually people who want the Facebook and Instagram link that you had showed in a couple of slides back, and Okay. yeah, and we have one question while you. So link we will be sharing the link. So let people. We'll share the WhatsApp number. They can join, and we will share the link, because at this point in time they may not be able to capture it. So it's best. Abhishek, in the meanwhile, if you can share our WhatsApp number, or Sahil, please. If you can just send us a message to join the group, we will send you the this deck, so that you have it for whenever you need. Yeah, that should be great. So we have one more question. Might be if you can just give a brief about that. अथर्व जी ने पूछा है कि उन्होंने उनका फेसबुक का पेज और फेसबुक का शॉप सेटअप कर लिया है, पर इंस्टाग्राम पे उनको उनका शॉप सेटअप करना है और उसमें उनको कुछ दिक्कत आ रही है. तो क्या आप कुछ बता सकते हैं इंस्टाग्राम शॉप के बारे में? है
Instagram hasn't allowed, like, at least small businesses are not allowed to open a shop on Instagram. Only very few, like really big brands, they can probably open a shop on Instagram, but that's it. So we are still waiting on that. In fact, मैं कल ही इसके बारे में पढ़ रही थी. So I mean, probably Mr. Adam Mosseri, who's the CEO of Instagram, he's planning to make it public for everyone. But for the time being, you can only start with your Facebook shop. It's in the pilot stage, so it's not available to everyone. Okay. Yeah, thank you so much. Questions on content planning? So एक क्वेश्चन था सोनी मेरे तरफ से कि जब हम कंटेंट लिख रहे हैं, हर बार हमारा जो कंटेंट है वो प्रोडक्ट ले लो, ये इस कॉन्टेक्स्ट में होना जरूरी है? सिर्फ कुछ बार प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कैसे डिवीजन कैसा होना चाहिए कंटेंट यूजुअली? तो अगर आप कोई कुछ बिग ब्रांड्स को देखोगे तो इनफैक्ट आई वांटेड टू शो यू अ पेज दैट आई लाइक रियली वेरी डियरली फॉलो ऑन फेसबुक इज पार्ले जी. So अगर आप पार्ले जी के पेज पे, I would like really suggest you all to check out पार्ले जी का पेज. They have some really interesting content going on there. तो जैसे ऐश्वर्या ने बोला कि ले लो, प्रोडक्ट खरीद लो, ये जो प्रोसेस होता है और ये टाइप की जो लैंग्वेज होती है, इसको हम लोग हार्ड सेलिंग बोलते हैं. So we are not supposed to hard sell. Social media पे क्या होता है, people get offended very fast. So people will be like, you're so selfish, you're only selling your product, telling me about it. What people are interested, you have to think it from an audience point of view. So हमारा audience क्या सोच रहा है? Audience is not interested in purchasing until unless they get that brand loyalty or they get that confidence in you. तो आप confidence कैसे बढ़ाओगे? सिर्फ hard selling से या सिर्फ मेरा product खरीद लो, उससे हमारा confidence नहीं बढ़ेगा. A lot of things are there. I understand small businesses में scope थोड़ा कम होता है, but we can still do a lot. First thing first is Reels. Reels is blowing up like anything, both on Facebook and Instagram. So मैं बहुत I will urge all of you to, because Reels is available on Facebook and Instagram both. थोड़ा सा try and delve into the format of Reels. It's a little scary in the beginning because you're putting yourself out there. I totally understand. बट जरूरी नहीं है कि आपको डांस करते हुए अपना फेस दिखा के ही रील बनाना है. आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखा के भी अलग अलग तरह से रील बना सकते हो. जस्ट डेल्व इनटू इट अ लिटिल बिट. इट्स अ वेरी वेरी गुड वे टू इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस. योर ऑडियंस को भी आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी. ट्राई एंड डेल्व इनटू दैट. Another way you can do it is talk a little bit more about your business. अगर आपको रील्स करना ही नहीं है, like that's like the last resort for you, you don't want to delve into that. सिंगल इमेजेस में भी अगर आप करना चाहते हो तो सिंगल इमेजेस में भी आप यू कैन टॉक मोर अबाउट योर ब्रांड, या बिहाइंड द सीन क्या होता है. अगर मेरा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल फूड बिजनेस है कोई जिसमें मैं स्नैक्स बनाती हूँ, तो मैं बिहाइंड द सीन कर सकती हूँ जिसमें स्नैक्स बनाते हुए या ऑर्डर पैक करते हुए लोगों का वीडियो है, छोटा सा क्लिप यू कैन ऑल्सो पुट. एंड जितना आप अपने बिजनेस के अंदर की चीजें दिखाओगे, लाइक आई एम नॉट सेइंग 100%, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बट जितना थोड़ा सा अंदर की चीजें, थोड़ी पर्सनल चीजें दिखाओगे तो लोगों को एक अच्छा लगता है देखने में. देन पीपल स्टार्ट परचेजिंग फ्रॉम यू, अंडरस्टैंडिंग कि okay, this person is genuine, I can definitely purchase from it. So yeah, I mean, this is how it works. So this is about hard selling and creating that balance basically in terms of content. Right. So I guess ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अदरवाइज ले लो काइंड ऑफ अ थिंग से ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, बम्बार्डिंग होगा पोस्ट. एग्जैक्टली, बम्बार्डिंग इज द राइट, सेंस लूज हो जाएगा जी. राइट. और एक क्वेश्चन था, लाइक कंटेंट के बारे में नहीं है तो probably we can take it after you complete the Instagram or the content part. Sure, no problem. Yeah. So just okay. So another thing is that is very very important is मैंने आपको बोला कि एक आपको टाइम सेट करना पड़ता है आप जब पोस्ट करते हो तो. Then a lot of you might be confused कि कौन से डेज को मैं सेटअप करूँ. Like Somi is telling कि okay, जो भी हमको relevant लगता है वो सेटअप करें, but how are we supposed to do it? So I'll tell you, it's very easy. You go to your Facebook page like here, and आप अगर scroll down करोगे तो यहाँ आपको option दिखता है called Insights. So if you go to Insights, यहाँ पे see all का option है, you just click here. So this page
sorry, थोड़ा because I'm screen sharing, तो थोड़ा slow हो जाता है. But this particular page is the most important page for you as a Facebook for business or as an Instagram for business also, because यहाँ पे आपको पता चलेगा exactly कि मेरा क्या work कर रहा है या क्या नहीं work कर रहा है. So you will get so many options. यहाँ तो सिर्फ आपको overview में, यहाँ पे आप days change कर सकते हो. एक दिन का अगर आपको देखना है, एक दिन का कर सकते हो. जिनका भी पेज है, I would suggest you to spend a lot of time and explore this page a little bit, because you will be spending a lot of time here, like weekly or daily also. It's a very important page for you. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा delve करोगे तो I mean you will find out a lot of things जो I mean you will be able to prepare a better post. Now when I was saying about time, आप time कैसे देख सकते हो? All you have to do is आप scroll down करोगे page insights में, तो there's something called posts. Click on post. तो यहाँ पे आपको days दिखेंगे and time दिखेंगे. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, because I'm showing you deAsra Foundations page and we post almost daily. तो हमारा number आपको शायद similar दिखेगा यहाँ पे in terms of days, as in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. यहाँ पे आपको लग, आप बोलोगे कि सारे same हैं, but it's not the case for all brands. बहुत सारे brands का for example Monday एकदम ही low होता है and Wednesday शायद बहुत high होता है. तो आप अपने brand के हिसाब से आप check करो कि कौन से days आपके लिए relevant है post करने के लिए, because I totally understand कि every day not possible for you to post. तो ये एक चीज हो गई. नाउ अब जब मैंने डे सेट कर लिया तो हमको टाइम भी जरूरी होता है. तो मंडे अगर हमारा बहुत रेलेवेंट डे है, मंडे इज द डे व्हेन आई गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक. तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मंडे को कभी भी पोस्ट कर सकती हूँ. लाइक इफ आई वांट टू पोस्ट एट 9 AM or 3 PM or whenever I have time I'll post. It doesn't work that way. यहाँ पे right under days you'll see this time का graph and it will tell you what time is good for you. For example, for this page, I see probably 8 AM in the morning or after 8 PM in the evening is a good time for me to post on Facebook. So I'll try and keep these two things in mind, and I'll try and post, upload my post during this time. And ये जो इतना बड़ा यहाँ पे आप फॉल देख रहे हो, इधर तो बिल्कुल ही पोस्ट नहीं करना चाहिए, because यहाँ पे रीच बहुत कम है मेरा. So I'll avoid and post during these times on my channel. So this is a very important tool, and आप please इस पे थोड़ा सा explore करो इस tool को. You will get to learn a lot about your page here. So this is how Insight works, and this is how you can post during strategic times in a week or day. So next thing is, while we are talking about the best practices, Facebook पे जो चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं, not only for one page, but while I was reading through like latest articles, I figured out that Facebook Live is one of the very attractive tools to gauge a lot of audience. So even Facebook Live and even Instagram Live is one of the very like best tools to work. तो अगर आप क्या होता है, लाइव इज समथिंग जहाँ पे आप डायरेक्टली सेम टाइम पे लिटरली फेस टू फेस बात करो, बट आप डिजिटल लेवल पे बात करो. इट्स द सेम थिंग. तो अगेन सेम फंडा है इसका भी. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लोगों को आपके ऑडियंस को क्या चाहिए होता है कि वो आपको पहचाने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड एंड में फिर परचेज होता है. तो फेसबुक लाइव वही हेल्प करता है कि अगर आप वीकली, आई वुड सजेस्ट कि इफ नॉट फेसबुक, इफ यू आर मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ट्राई डूइंग इंस्टाग्राम लाइव्स आल्सो. And all you have to do is talk about your product. It could be like a 10-minute live, it could be like a 30-minute live, whatever you like. Invite people and get on live, talk to people, tell them about your products, tell them about new launches, any offers coming up, or how to use your product, or anything interesting about your product or service. तो आप कुछ भी वो सब के बारे में बात कर सकते हो weekly या once in 2 weeks or something. And you see the difference. I can tell you कि धीरे धीरे immediately आपको शायद result ना दिखे, but then धीरे धीरे you will see in a year or a year and a half. If you be regular in this, as Sahil said, you always have to be consistent. You have to be consistent in these things also. So बहुत फर्क पड़ता है, especially after COVID has started. People have started getting more active on lives. तो उससे लाइव से बहुत लोग परचेजेस भी करते हैं. इनफैक्ट व्हेन व्हाइल यू आर डूइंग अ लाइव, अ पर्सन कैन DM you or message you in the live only that I want to buy your product, please tell me about the price and details and whatever they are curious about. So try doing it. It's very, again, it could be a little intimidating to put yourself out there,
but the more you put yourself out there, the more it's better for you also, and your audience, like it will be in the end better for your business. So try doing that. Very good tool. Again, ORM, as I've been saying that to audience से आपका confidence बढ़ाने के लिए very important tool is ORM, online reputation management. It's nothing but engaging with your audience on comments and direct messages. So बहुत बार हम सबको पता है कि trolls होते हैं तो ये सारे pages पे कुछ बहुत genuine replies भी होते हैं, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं सोशल मीडिया पे. तो अगर आपका कोई सर्विस उनको, अगर आपकी का मिस्टेक नहीं भी होगा तो लोग बुरा मान जाते हैं. दे मेंशन इन द कमेंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि ओके दिस बिजनेस इज फेक एंड ब्ला ब्ला, जो भी है उनका व्हाटएवर दे आर रेजिंग आउट, दे पुट इट आउट ऑन योर बिजनेस एंड ट्राई टू पुल यू डाउन और डिफेम यू and things like that. So the best way to deal with these kind of people is immediately put up your reply. Like यहाँ पे मैंने एक example भी दिया है. It's a huge मतलब काफी बड़ा है ये, तो whenever this is shared with you, please do read through it. Another example, if you want to understand online reputation management or ORM, this is exactly called what ORM is. It's actually a process of talking to your or managing the audience on your DMs and comments. तो आप एक स्विगी का पेज है on Instagram. If any of you are active on Instagram, please go through that and check out their comments. So Swiggy replies very smartly on their comments, and that is one of the best way of ORM or online reputation management. So yeah. Just over here, there was a question from someone regarding, can I hide my Facebook, Yes. My Google My Business comment? So hiding doesn't work. I think it was from Tushar. Hiding doesn't work. What is best is you address it. Yeah. And then because no social platform will allow you to hide, so it's best you go ahead and address whatever is the concern. Go ahead, Somi. So Bad. we were not able to hear you. Can you please? Can you hear me? Yeah, My- now we can. Yes. Thank you. Some issue with my internet connection. Sorry about that. I'm saying कि आप delete कर सकते हो आपके comments. Instagram और Facebook आपको वो option देता है. तो अब बहुत सारे irrelevant comments आते हैं, तो उनको आप definitely delete कर सकते हो. But कुछ अगर negative responses भी हैं, I would suggest अगर आप थोड़ा सा smartly उनको answer करोगे, तो it will be nice. I mean people will like it the way, like how you dealt with it, and जो आपके ऑडियंस है वो काफी लॉयल होते हैं, तो वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर बिहेवियर ऑन on your channels and stuff. So I mean even other audience will see कि okay, I mean this particular business is dealing with the negative comments also, मतलब I mean they're genuine. So it is a process. And ORM का क्या होता है, आपको दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार आप डेफिनेटली अपने नोटिफिकेशंस चेक करो इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि कुछ ना कुछ कमेंट्स आते ही हैं. So it's a daily process, could be a little tedious, but एक बार आप once you get in a habit of it, then it won't seem that difficult for the time being. So yeah, this is all about ORM. And insights के बारे में मैंने already बात कर लिया अभी ऊपर, so I'm just moving on ahead. Yeah, I mean this is it about Facebook and Instagram. यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो मैंने Instagram के कुछ facts share किए हैं, you can check them out. And here's a link if you haven't started your Instagram page. Once this is shared with you, you can click on the link and immediately start your page. So yeah, this is all about Facebook and Instagram. Any questions? Yeah, so देविदास जी ने पूछा कि Facebook Reels का यूज कैसे होता है. Okay. Yeah. So Facebook Reels, आप if you go to Facebook. So Facebook Reels, I would suggest Facebook Reel और Instagram Reel basically एक ही चीज है. तो अगर आप Facebook पे अपलोड करते हो तो वो Instagram पे भी जाएगा, और आप Instagram पे अपलोड करते हो तो वो Facebook पे भी जाएगा. Honestly, I mean, being a millennial, I would say, मैंने कभी Facebook से Reel अपलोड नहीं किया है. मैं हमेशा Instagram से Reel अपलोड करती हूँ. So I haven't delved into, honestly speaking, haven't delved into how Facebook से you can post a Reel. But I would suggest आप हमेशा रील इंस्टाग्राम से पोस्ट करो. इंस्टाग्राम आप सेटअप करो आपके बिजनेस का, एंड वहां से आप पोस्ट करो.
इंस्टाग्राम पे आपको ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पोस्ट लाइक सिर्फ सिंगल इमेज पोस्ट करने के लिए, वीडियो, रील, आईजीटीवी और अलग अलग 2-3 और ऑप्शंस हैं आपके, वहां पे आप डेल्व कर सकते हो। रील कैसे बनाना होता है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इंस्टाग्राम पे भी एडिट करने का ऑप्शन होता है, बट इंस्टाग्राम एज ए प्लेटफॉर्म में बहुत ग्लिच होते हैं या बहुत प्रॉब्लम्स होती है इंस्टाग्राम के ही एंड से, तो आपको इंस्टाग्राम पे कभी वीडियो एडिट नहीं करना चाहिए। देयर इज अ वेरी इजी ऐप लाइक कैनवा कॉल्ड इन शॉर्ट्स, वेरी इजी टू ऑपरेट। आप आराम से आप कोई भी वीडियो शूट करो, इन शॉर्ट पे जाके आप एडिट कर लो एंड यू कैन इजीली अपलोड इट एज अ रील। अब जैसे ही इंस्टाग्राम पे एज अ रील अपलोड करोगे, वो फेसबुक के भी एल्गोरिदम में हो जाता है और आपके फेसबुक पेज के रील में भी दिखेगा वो। So I mean, this is how you can, delve into, like, you can start working on the reels. I Right. hope I'm able to answer the question. I guess it would be even time saving in that case, while you don't Yeah. need not actually manage 2 different platforms at a time. Exactly. Okay. And even Devidas ji is curious to know what is Meta Business Suite, if we can talk about it. मेटा बिजनेस इज नथिंग बट फेसबुक फॉर बिजनेस जो था वो अभी मेटा, सो फेसबुक के अंडर पहले फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आता था, बट नाउ व्हाट मिस्टर ज़करबर्ग हैज डन इज ही हैज चेंज्ड द नेम टू मेटा। सो मेटा इज अ यूनिवर्स बेसिकली, और उसके अंदर फेसबुक है, फेसबुक फॉर बिजनेस है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस है, प्रॉबेबली व्हाट्सएप भी आता है। So all these like their subsidiaries come under one main branch is called or one main channel is which is called Meta. Yeah. Great. That is interesting. Ashwini ji का doubt है, what is your insight on whether Facebook or Instagram can provide clientele base to purchase 10 lakh plus amount of services? She would like to know about it. Aishwarya, I did not understand the question. Can you please come again? Yeah, Ashwini ji, if you want to unmute and try asking the question yourself. Yeah, I would like to ask. I'm just not keeping well, so just let me know if I'm audible clearly. Yes, you are. Please. You are. Yeah. So see, what my concern is. First is I'm an architect. We are not allowed to do lot of promotion as per our code of ethics, professional code of ethics. Okay. But now, due to digital marketing and all, we can see a lot of people coming on, front to front. It's like for us, if you ask, it's like doing a promotion of your movie. Okay, so now if I'm doing a promotion, so much of promotion, do you think that on Facebook there are people who can spend 10 lakh rupees for interior design build services, or at least 3 lakh rupees for architectural design build services? I don't think so. Since last 3 years I'm pouring so much of money in digital marketing and lead generation. I don't see I find that kind of clientele base over here. Okay, so you are aware of running ads on Facebook and Instagram, Ashwini? Yeah, I'm aware of that, and I'm not from millennial generation. I come from early 80s, and I believe in doing a lot of groundwork and getting it done into reality. But yes, I have not promoted a lot. जो दिखता है वो बिकता है. So my marketing agency is behind me to upload all 60 projects जो हमने lockdown में किए हैं. We will be uploading it soon. But do you feel, will it convert? What will be the funnel ratio? I mean, I'll take that question, Somi, for you. So first of all, you are a millennial. So anyone born in the 70s to 90s is a millennial. Okay. And after that, there is Gen X and whatever. So now, see, your question was, can you get business or whatever for people who are or 10 lakh, 3 lakh or whatever? Yeah, correct. So let me put it the other way around. What if I flip, like people who kind of work with architects or who spend that kind of money to do their homes, they are also people. They are also on social media. But the difference is they do different things. A kid in college would be attracted to certain things. They want instant gratification. But doing a home or getting an architect to design a home is not an impulsive buy. It's a well thought out decision between at least two people or more. So at least the husband. Yeah, very true. Yeah. So if you approach it that way, you will get
get your audience. So most of the time what happens is that I don't know who your agency is, but they may be pitching that you'll get instant leads. That's not how it works. What you should be looking at is how do you kind of engage with them, because probably working with an architect, the decision process takes 6 months or 1.5 years or whatever. They decide and then they Yeah. so in that page, in that time frame, you have to engage. So Okay. so that what you should be using the social media for is your branding. How are you different from the others? There are others that people could work with, and there is a certain design ethos that the person wants and you can offer, and so on and so forth. So that would be how we would suggest you approach social media. Okay, fine. So at least I have taken the first step rightly. I have created my own domain where I'm writing down now what I believe in architecture and interior, and how holistically if we design eco-friendly developments, which can be done in 8 months, saving the cost. And Nitin Gadkari has promoted that construction technology, but it is unfortunate that nobody is talking about it. So I'm talking it now on my domains. Absolutely. So see, when you talk about eco-friendly, correct, architecture, you're talking to a certain audience. It's not a mass audience. No. Yeah. So it's not a mass audience. No. So you have to be, so what else does your audience do? So for example, there are, I can talk about eco-friendly, like, so there is this, this company that does composting, correct? And they encourage composting at home. It's called Khamba, and they have a huge social media presence. So you should be looking at people who are over there, because only once a person is aware of what is eco-friendly will they come to you. Now, if you end up reaching out to 20s something who are not bothered about ecology or whatever of the environment at the time, then it's obviously not going to work. So which is why what we talked about was say Somi shared the content calendar. The idea is like what will work with your audience, and then plan it out. Yeah, so like it makes more sense to talk about what design services you are giving, which are different than the market, and create engagement with that kind of crowd on all these platforms. Exactly. Figure out your audience and figure out your content. And only when these two are in sync will it work. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. You're welcome. Sorry about that. My electricity went out, so I had to reconnect through my phone. Yeah, it went out at the right time. We were talking about eco-friendly, so the lesser energy we use, the better it is. Okay. किसी और को कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे भास्कर जी को, साहिल को या सोनी को? Okay, we would again encourage you to join the WhatsApp group because there we do not market. We will share the content with you so that you have this. Right. And also, if you have any questions for Bhaskar, Sahil, or Somi, you can post it on deAsra's discussion forum, and we will get the answers for you. And I've shared the link for the discussion forum here. You can pose your questions and we can get the answers. Also, I would like to, if we had to conclude, I would like to say, for being the social champs for which all of us are here, there are a few takeaways which I could gauge from the conversation we had with these experts, that you should always be aware of when your customer or your prospective customers are available on a specific channel where you are putting out the posts. Then another is if you want to have good visibility, having good comments, having good reviews, and having good and timely replies to the comments that you get is equally important. Being consistent with your posts
would play a major role. And as it is always said that content is the king, so you should always have good content when you're marketing on these social channels, because it is a vast space you're taking out your products with. So the USP of your product, the uniqueness of your product should be highlighted well in your content, is what I could, I could give out as the takeaways of this session. Bhaskar, anything else you would like to give as a tip or a key for this, the people here out about social media management while we are concluding? You have summed it pretty well, Aishwarya. So as Aishwarya suggested, we would encourage you to keep exploring the social for your business. And the best way to get in touch with deAsra is to join the discussion forum, because see, it is not always possible to have immediate response. But if you post over there, we will be able to map you to the right experts who can help you with your questions. Right. And also, if anybody of you needs help with social media marketing for your businesses, social channels, deAsra has a wide variety of services for marketing, as well as if you need any other services support as well, like say for compliances, for funding and all. So deAsra is there to help you with all of these, and with number of experts to whom you can pose your questions. So discussion forum is not just restricted obviously for marketing questions, but overall during your business journey, any support you need, you can comment your requirement or question on deAsra's discussion forum, or reach out to deAsra over an email or the phone number which is there on the website, which is deAsra.in. I'll also post the website here. So glad to have all of you here. Thank you, Bhaskar. Thank you, Sahil. Thank you so much for sharing the inputs about various channels and how effectively social media marketing would work for small businesses as well. So thank you so much. Have a great weekend, everyone. We're still one day far weekend, but still let us concentrate on the weekends to be happy and enthusiastic about the one day left. Thank you. Thanks. Thank you so much.